Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss reproduction in fungi, and especially we are going to discuss asexual reproduction in fungi. So let's move to the class bro. So dear students, reproduction in fungi और रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल को. सो डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, मोस्ट ऑफ द फंजाई दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरीकों से मोस्टली, सिवाय सिर्फ एक ग्रुप के, जिनको हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई जिसमें सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती है. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है ये दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो हम स्टार्ट करने लगे फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मौजूद है फंजाई के अंदर. ठीक है, और मोस्टली फंजाई जो है वो दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सिवाय सिर्फ इम्परफेक्ट के जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते. क्लियर? उनके अंदर सेक्सुअल फेज जो है ऑब्जर्व नहीं होती. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो ये एक किस्म की क्लासिफिकेशन ही बन जाती है. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है. इसमें जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम, और इसके साथ साथ इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे हम जो इसकी के एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, वो भी डियर स्टूडेंट्स वो इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो हम इसको उसी तरह से कोशिश करेंगे कि एक कंपैरेटिव फॉर्म में, एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर इसको जो है वो कवर करें. So starting from the first method of asexual, और इससे पहले सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बेसिक डिफरेंस जो कि आप जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स, दो डिफरेंट जेंडर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़ुमरे में लेके आते हैं. ठीक है, जिसमें जो गैमीट्स बनते हैं. ठीक है, और इसी तरह से एसेक्सुअल जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, और आम तौर पर इसमें माइटोसिस एक ही जो डिवीजन है वो इन्वॉल्व होती है. सो दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो ऑलमोस्ट उसके क्लोन होते हैं. क्लियर? और मज़ीद जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर के अंदर आप इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन. सो let's start over here. We are here concerned with the fungi. So asexual reproduction in fungi. The first method is spore formation. So spore formation, dear students. Dear students, जो स्पोर्स होते हैं बेसिकली ये दोनों तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं. ये सेक्सुअल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और एसेक्सुअली भी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा वो हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी. और यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो एसेक्सुअल स्पोर्स है. क्लियर? सो स्पोर्स are produced sexually
as well as asexually. क्लियर? तो जब आमतौर पर जब डिफरेंट हाइफी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनसे जो स्पोर्स बनते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो कंसिडर किया जाता है, और अगर सेम एक ही हाइफी से स्पोर्स बन रहे हों तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर किया जाता है। ये जस्ट एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है इस हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स द स्पोर्ट्स जिसकी हम बात करें, एसेक्सुअल जिसकी बात करें, स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड। अब यहां पर मैं इसको अलहदा से लिखने वाला हूं, इसको मार्क कर लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनसाइड, इनसाइड, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। सो स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड a sac like structure which is called sporangium, which is called sporangium। इसकी प्लूरल है स्पोरेंजिया, ठीक है। एक सैक होता है, उसके अंदर अंदर बनते हैं, इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम व्हिच इज कट ऑफ, व्हिच इज मींस कि जो स्पोरेंजियम है व्हिच इज कट ऑफ फ्रॉम hyphae with complete septum। यानी जिस हाइफी के साथ ये स्पोरेंजियम अटैच होती है उसकी बेस के ऊपर एक कंप्लीट यानी कि सेपरेशन है एक सेप्टम की मदद से। क्लियर? आगे डायग्राम में इसको मैं शो ऑफ करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कि जो स्पोरेंजियम है, द स्पोरेंजियम is attached to a special hyphae called, अब उस स्पेशल हाइफी को क्या कहेंगे? Called sporangiophore, sporangiophore, PHORE। ये फोर का वर्ड जहां पर आएगा इसका मतलब है कोई ब्रांच जिसने ऊपर कोई स्ट्रक्चर जो है उसको कैप्चर किया हुआ है, जिसको बेयर किया हुआ है, ठीक है। तो फोर मीन्स अ ब्रांच, स्पोरेंजियो मीन्स अ ब्रांच विच इज बेयरिंग अ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम को बेयर करने वाली ब्रांच, उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये एक खास किस्म के हाइफी होते हैं जो कि इसको बेयर कर रहे होते हैं। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Here are some characteristics of spores। किस तरह के होते हैं स्पोर्स? तो they are light weight, मतलब कि बिल्कुल हल्के, नंबर वन। नंबर टू, they are small in size। Number three, produced in large
quantity plus number 4, they are haploid. हैप्लॉइड समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अनपेयर्ड हो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं. क्लियर? So they are lightweight, they are small in size, they are produced in large quantities, they are haploid. Clear? So these are the characteristics of spores. Now their dispersal, how they are dispersed. So dear students, they are dispersed by wind, हवा के जरिए. Clear? By small animals, छोटे छोटे जानवर, ठीक है, and insects, कीड़े मकोड़े यानी कि हशरात, or also by rain splashes, अगर बारिश के कतरे वहाँ पर उसके ऊपर पड़ते हैं तो तब भी जो है वो स्पोरेंजियम जो है वो रप्चर होगी और उसमें से निकलेंगे. एंड डू नॉट नीड वाटर, ये खास बात याद रखनी है, डू नॉट नीड वाटर. और एक और अहम बात, इनका करेक्टर याद रखिएगा, यहाँ पर मेंशन करता हूँ, दे आर नॉन मोटाइल, खुद से हरकत नहीं करते, मूव नहीं करते. क्लियर? ये भी इनका करेक्टरिस्टिक है. क्लियर? और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर, दैट इज इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड of reproduction in fungi. So जितने भी हम मेथड्स पढ़ेंगे एसेक्सुअल में, तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन ये सबसे कॉमन मेथड है. क्लियर? अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं. So here it is. This is a special hyphae और इसके ऊपर मौजूद है एक सैक. ये काफ़ी थिक वॉल होता है, ठीक है, इट इज़ थिक वॉल्ड, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं. और इसके अंदर मौजूद हैं हैप्लॉइड स्पोर्स. क्लियर? और दिस इज एक्चुअली sporangium, and these are the spores, and this stalk to which this sporangium is attached, this is called as, ये जो students stalk को क्या कहते हैं, sporangiophore. Clear? और ये इसके नीचे substrate जिसके साथ ये attached है. Now moving towards the second category, that is conidia formation. So that's the second method of asexual reproduction in fungi, conidia. ये प्लूरल फॉर्म है, कॉनिडियम इज द सिंगुलर. सो अब हैं ये भी स्पोर्स, ठीक है, कॉनिडिया भी स्पोर है, लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ठीक है, इन स्पोर्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं. कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल asexual spores
formed, अब खास बात, ये inside था dear student, and these are formed on the hyphae. Clear? और इसी तरह से which is cut off, अब ये hyphae जो है which is cut off completely by septum or dear students, the hyphae on which conidia are attached are called, तो जैसे वो हाइफी जिसके साथ स्पोरेंजियम अटैच था उसे क्या कहते थे? स्पोरेंजियोफोर. इसी तरह से वो हाइफी जिसके साथ ये कोनिडिया अटैच होंगे उसे क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर, फोर मतलब बेयरिंग, कोनिडियो मीन्स कोनिडिया, और कोनिडिया क्या है? दे आर द एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, तो इधर भी मैंने एक बात की थी, यहाँ पे भी. सो सेप्टा की बात हो रही थी, कंप्लीट सेप्टम. तो ये है कंप्लीट सेप्टम, दिस वन, ये जो कि स्पोरेंजियम को और इस हाइफी को सेपरेट कर रहा है. दिस इज सेप्टम. क्लियर? सो दिस इज सेप्टम एंड दे आर फॉर्म्ड conidia. Conidia are formed in chains, या वो चेन की शक्ल में, और clusters, और clusters on substrate. So let's have a look over here. So these are conidia. इनको नेकेड स्पोर्स भी कहते हैं, मतलब कि ये सैक के अंदर नहीं, हाइफी के अंदर नहीं है, या इस सैक के अंदर नहीं है, बल्कि ऊपर लगे हुए हैं. क्लियर? दोनों अरेंजमेंट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ. So this is how, यहाँ पर सेप्टम, इसी तरह से यहाँ पर ये सेप्टम, और यहाँ पर ये सेप्टम मौजूद है.
क्योंकि कंप्लीटली इनको सेपरेट कर देगा फ्रॉम द स्पोर्स। और डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर कॉनिडिया। लेकिन यहाँ पर किस तरह से चेन्स की शक्ल में, एज यू कैन सी ये चेन्स है, कॉनिडिया की चेन है, ये सारी चेन्स की अरेंजमेंट है। और ये जिसके साथ अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, उस हाइफी को स्पेशली कॉनिडियो फोर। क्लियर। और ये इनका सेप्टम जिसके ज़रिए ये अलहदा होते हैं ओवर हेयर, सेप्टम। और ये वाली अरेंजमेंट क्या है, दिस इज द कॉनिडियो फोर। और ये वाली अरेंजमेंट क्या है, दिस इज क्लस्टर्स। सो दीज आर द कॉनिडिया clusters. So this is the another method of formation, asexual reproduction. Now the fourth method, a third method, is fragmentation. So it is very easy to understand. So इसमें क्या होगा, the hyphae breaks at certain points into fragments, and each fragment forms the new mycelium. Here, so it is very easy to understand. So let's suppose this is a hyphae here, or it has broken into pieces. So what will happen? So it will form the remaining one, और इसके साथ क्या होगा, इसी तरह से it will be regenerated, और फिर इसी तरह से इसके साथ that will grow. So from 3 different myceliums, 3 mycelium have been formed. And finally, the fourth method is budding. So bud क्या होता है dear students, आपको पता है, that is an outgrowth. So it occurs usually in the unicellular non-hyphal fungi called yeasts. तो डियर स्टूडेंट, yeast कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि इट्स अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई। तो उनका एक पूरा ग्रुप है जिसमें से एक का नाम आप काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, एंड फॉर एग्जांपल Saccharomyces cerevisiae, इसका नाम आप सुनते आ रहे हैं। तो ये उनमें से एक है, उस ग्रुप में से एक है यूनिसेलुलर नॉन हाइफल, यानी कि इसमें हाइफी नहीं बनते, ये यूनिसेलुलर है, इसमें हाइफी नहीं बनते, याद रखिएगा। ये इसके अंदर a bud is formed,
by two methods। इसमें दो तरीकेकार हैं, ठीक है। एक है नंबर 1 इज सिमेट्रिकल और दूसरा है एसिमेट्रिकल। बट तो होगा क्या? सो दिस इज अ yeast, clear? Look at this please, and it is the nucleus. In the next stage the yeast will have an outgrowth, ये outgrowth बन गई और अब क्या होगा कि इसका जो सा न्यूक्लियस है ये डिवाइड करना शुरू करेगा and ultimately it will move, one nucleus will remain inside and the other will move to the bud, clear? So this is how the budding takes place. This is asymmetrical. This is asymmetrical budding. So this is bud, clear? और बाद में ये डिटैच भी हो जाएगी उससे, ठीक है। So this is asymmetrical budding। और समटाइम्स ऐसा होता है कि yeast जो है, so this is a yeast cell and it just divides into two equal halves। और उससे पहले कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है, दो न्यूक्लियस बन चुके होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये अलग-अलग हो जाते हैं। They got separated. So this is called a symmetrical budding। Symmetrical मतलब equal halves में डिवाइड होना, asymmetrical unequal halves में, ठीक है। This is symmetrical budding। तो इनमें मोस्ट कॉमनली जो यीस्ट है वो बर्डिंग के ज़रिए ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बाज़ औक़ात अगर कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो फिर ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स बनाते हैं, वो आगे चलकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।